In this video, we will solve these questions. And the first question is cos inverse sin x. We have to differentiate this function. So let's represent the function with y. So y equal to cos inverse sin x. So we have two formulas. Using that, we can solve this problem. So we know that cos pi by 2 minus x is sin x. We know this. So यहाँ पे हम sin x को replace कर सकता cos pi by 2 minus x से. Or we can use another formula, that is cos inverse x plus sin inverse x equal to pi by 2. Or I can write this as sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. So from here I can find cos inverse x. So cos inverse x क्या होगा? Cos inverse x होगा pi by 2 minus sin inverse x. And by assuming this as x, we can apply this formula. So we can use any of the formula to solve this problem. So if I use this formula, what I will get? Suppose ये मेरे लिए x है. So cos inverse x क्या होगा? Pi by 2 minus sin inverse x. ये पूरा मेरे लिए क्या था? x था. So cos inverse x is pi by 2 minus sin inverse x. ठीक है? So we will get y equal to pi by 2 minus sin inverse of sin x क्या होगा? x होगा. So if I use this formula, तब भी मेरे को यही आंसर मिलेगा. y equal to pi by 2 minus x ही मिलेगा. So let me show that. So y equal to cos inverse sin x था. sin x जगह लिख सकता हूँ cos pi by 2 minus x. क्योंकि cos pi by 2 minus x sin x, तो sin x की जगह पे हम लिख सकता cos pi by 2 minus x. Now we can apply the formula cos inverse of cos x. अगर ये पूरा मेरे लिए x है तो cos inverse of cos x क्या होगा? x होगा. ठीक है? So you can see by using any formula we will arrive at the same equation. So let me solve this. So let me find the derivative. So d by dx of y equal to d by dx of pi by 2 minus x. Now डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2. पाई बाई 2 क्या है? कांस्टेंट है. डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 क्या होगा? 0 होगा. माइनस डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा? 1 होगा. एंड लेफ्ट साइड में क्या है? dy by dx है. इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. सो dy by dx इज माइनस 1. dy by dx इज माइनस 1. ठीक है? So this is the solution, or I can say derivative of y with respect to x. Now we'll move on to question number 2. So in the next question, function is given to you and the function is tan inverse sin x by 1 plus cos x. ये function है. ठीक है? Let's say this is y and we have to find dy by dx. So we will use some formulas here. We will use the formula sin 2x. sin 2x क्या होता है? sin 2x होता है 2 sin x cos x. So what will be sin x? So you can clearly observe ये जो 2x है ये बन गया x. मतलब जो भी एंगल था वो हाफ हो गया. उसी तरह अगर यहाँ पे x रहेगा तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा? 2 sin x by 2 and cos x by 2. ठीक है? अगर 2x है उसका हाफ क्या होता है? x होता है. Therefore x का हाफ क्या होगा? x by 2 होगा. So we will put 2 sin x by 2 cos x by 2 in place of sin x. Similarly, I can apply another formula here. We have formula 1 plus cos 2 theta, or I can say 1 plus cos 2x. 1 plus cos 2x क्या होता? 2 cos square x होता. So similarly 1 plus cos 2x क्या होगा? 1 plus cos 2x होगा 2 cos square x by 2. क्योंकि यहाँ पर भी 2x जो एंगल था वो हाफ हो गया. 2x बन गया x, मतलब ये एंगल हाफ हो गया. सिमिलरली x क्या बन जाएगा? x by 2 बन जाएगा. मतलब एंगल हाफ करना है. सो वी विल पुट 2 cos square x by 2 in place of 1 plus cos x.
So if you put these values, we will get y equal to tan inverse sin x क्या बन जाएगा 2 sin x by 2 cos x by 2 and 1 plus cos x क्या बन जाएगा 2 cos square x by 2. Now we can reduce this क्योंकि यहाँ पे 2 कैंसिल हो सकता एंड यहाँ पे क्या है cos x by 2 है एंड यहाँ पे है cos square x by 2, मतलब एक cos x by 2 कैंसिल हो जाएगा. सो 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x by 2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक cos x by 2 रह जाएगा. सो sin x by 2 डिवाइडेड बाई cos x by 2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan x by 2. And we will apply the formula tan inverse of tan x. Tan inverse of tan x. Tan inverse of tan x is x. So let's say this is x. So tan inverse of tan x क्या होगा, x होगा. Tan inverse of tan x is x. Now we will differentiate this function. So we will find dy by dx. So dy by dx is d by dx of x by 2. So x by 2 मतलब क्या है, x by 2 मतलब है 1 by 2 into x. And 1 by 2 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर. So 1 by 2 डेरिवेटिव ऑफ x एंड डेरिवेटिव x कितना होता है, वो होता है 1. So 1 into 1 by 2 is 1 by 2. ये है dy by dx. So this is how you find dy by dx for the given function. Now we'll move on to the last problem. So the function is sin inverse 2 power x plus 1 by 1 plus 4 power x. ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है. सो लेट्स से y इक्वल टू sin inverse 2 power x plus 1 by 1 plus 4 power x and we have to find derivative of this function. So again this is the inverse trigonometric function and we can reduce this function. So इसको reduce कैसे करें, ये जो न्यूमरेटर है 2 power x plus 1, 2 power x plus 1. So इसको हम लिख सकता है 2 power x into 2 power 1. क्यों, क्योंकि इसका पावर ऐड होने पर आई विल गेट दिस, क्योंकि बेस सेम है ना, तो इस पावर्स ऐड होने पर आई विल गेट दिस. सो आई कैन राइट दिस एज दिस एंड इन द डिनोमिनेटर व्हाट आई कैन राइट, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस 4 पावर x है एंड वी कैन मॉडिफाई दिस 4 पावर x. 4 पावर x को हम लिख सकता 2 स्क्वायर होल पावर x, ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब 4 की जगह पे हम 2 स्क्वायर लिख सकता एंड वी कैन इंटरचेंज दिस 2 एंड x. ये प्रॉपर्टी है इसका. सो ऑन इंटरचेंजिंग व्हाट आई विल गेट 2 पावर x होल स्क्वायर which is 4 power x. So we will put 2 power x into 2 in place of 2 power x plus 1 and we will put 2x power 2 in place of 4 power x. So let me put that. So I will get y equal to sin inverse 2 into 2 power x. So 2 power x into 2 can be rewritten as 2 into 2 power x divided by 1 plus, इसको हम लिख सकते 2 power x whole power 2, ठीक है. Now we will substitute 2 power x equals to tan theta. 2 power x equals to tan theta. We will put tan theta in place of 2 power x. So what I will get y equal to sin inverse 2 into tan theta divided by 1 plus tan theta square, ठीक है. I will get this. I can write tan theta square as tan square theta. So I will write this as tan square theta. And we have formula for sin 2 theta. Because sin 2 theta is 2 sin theta cos theta and there is another formula which is 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. ये भी formula है. So basically we will put sin 2 theta in place of 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. So sin inverse sin 2 theta, ये क्या है y है. Now we know that sin inverse of sin x, sin inverse of sin x क्या होता, x होता. So let's say ये मेरे लिए x है, तो sin inverse of sin x is x. And what is theta? I can find theta from this equation. So theta will be
tan इनवर्स 2 power x. ठीक है, theta is tan inverse 2 power x. Now we will put tan inverse 2 power x in place of theta. So I will get y equal to 2 into tan inverse 2 power x. So this is the simplified form of the given function. Now we will differentiate this function. So d by dx of y, ये क्या है, d by dx of y, and right में क्या आएगा, d by dx of 2 into tan inverse 2 power x आएगा. And now I can take this to outside कि वो constant है. So 2 into and left hand side में क्या है, dy by dx. So 2 into derivative of tan inverse 2 power x, ये है. So यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेगा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x. यहाँ पे चेन रूल का यूज करेगा. फॉर दैट वी विल एज्यूम 2 power x एज x. ये पूरा को हम x एज्यूम कर लेगा. So 2 into डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 upon 1 plus x स्क्वायर इनटू, क्योंकि हम इसको x एज्यूम किया था, सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2 power x is 2 power x log 2. So here I have used the formula of derivative of a power x. Derivative of a power x is a power x log a. ठीक है, ये फॉर्मूला है. So ये फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर दिया to find derivative of 2 power x. So derivative of 2 power x will be 2 power x log 2, means a power x log a. Now what I can do, I can multiply this 2 power x into 2, because 2 power x into 2 power x into 2 is 2 power x plus 1. So we will put 2 power x plus 1 into log 2 divided by, so यहाँ पे क्या है, 2 power x power 2, and so 2 power x power 2 is basically 4 power x. ठीक है, क्योंकि इसको हम ऐसा भी लिख सकता, and this was basically 4 power x. So इसको हम डायरेक्टली 4 power x लिख सकता. ठीक है, so 1 plus 4 power x. ठीक है, इसके जगह हम लिख लिया 4 power x. So ये है dy by dx. So this is how you solve these type of questions. So this is it for the video. In the next video we will solve more questions from derivatives. So stay tuned for the next video. Thank you for watching this video.